हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो आज हम कंपेयर करेंगे डिफरेंस ऑफ विल कंपेयर द डिफरेंस बिटवीन रोलैंड बार्थ्स वर्क एंड जूलिया क्रिस्टेवा। ओके, सो इसका नाम है रोलैंड बार्थ्स एंड जूलिया क्रिस्टेवा। ठीक है, सो विल कवर द एस्पेक्ट्स ऑफ दीज बोथ. ओके, विल कवर वेरियस डोमेन्स कि किन किन चीज़ों पे बात हो रही है. ओके, एंड इट्स गोइंग टू बी अ रियली इंटरेस्टिंग वीडियो. आई होप आप साथ में जुड़ो. सो अगर हम बात करें मेन फील्ड की, तो इसका काम है सीमेंटिक्स. ठीक है, लिटरेचर क्रिटिसिज्म, कल्चरल थ्योरी. देन इट टॉक्स अबाउट फोटोग्राफी, जिसमें हमने बात की थी. इसकी एक बुक थी जिसका नाम था, I'm forgetting its name. It's by the name of Cambria Lucidia, something like that. Okay, so इसमें काफ़ी की इमेज जो है वो स्टिल होती है और उसमें लाइक टाइम सेव हो जाता है. इसने भी बात की है सिमेंटिक्स की, लिंग्विस्टिक्स की, साइको एनालिसिस की. एंड विल ट्राई टू स्टडी अबाउट हर वर्क रिलेटेड टू साइको एनालिसिस, कि इसने क्या चीज़ के बारे में बात की और क्या चीज़. ठीक है, देन शी टॉक्स अबाउट फेमिनिज्म, लिटरेचर थ्योरी. Okay, so various point she had covered. So we'll try to break it down even more further to see how thing goes. Okay, then comes the concept of key concept. ठीक है, की concepts की किन किन concepts के बारे में बात की है. इसने बात की है mythologies, everyday culture as a system of sign. Okay, then he talks about the death of the author, कि author मर जाता है और जो reader होता है वो पैदा हो जाता है. फिर he talks about stadium and punctum in photography. Then she talks about Julia Kristeva. She talks about intertextuality, symbiotic versus semiotic. Then she talks about abjection. Okay, so what is abjection? We will also study this in detail, कि abjection है क्या. Okay, then signature style. Okay, then comes the signature styles. So signature styles talk about Roland Barthes. He was essayistic, ऐसे की फॉर्म में लिखता था. ठीक है, एंड काफ़ी ज़्यादा प्लेफुल एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है इसने कि प्लेफुल क्या चीज़ होती है. ठीक है, देन कम मिक्सिंग एकेडमिक एंड पोइटिक लैंग्वेज. ओके, सो ही टॉक्स अबाउट मिक्सिंग एकेडमिक एंड पोइटिक लैंग्वेज. देन अगर हम इसकी बात करें तो शी टॉक्स अबाउट dance. Okay, then she talks about theoretical. Okay, then she talks about blending. Okay, then she blended psychoanalysis with philosophy. तो काफ़ी अच्छा इसने ये काम किया है. Okay, approach to text. अगर हम बात करें approach to text की, तो break down how sign work in culture and literature. Okay, he talks about breaking sign and focuses on meaning from the reader's perspective, कि भाई जो रीडर है उसके हिसाब से कैसे चीज़ें चलती हैं, कैसे ये सब चीज़ें होती हैं. ओके, अगर हम इसकी बात करें, सीज टेक्स्ट एज वेब्स ऑफ अदर टेक्स्ट, कि एक टेक्स्ट दूसरे के साथ लिंक होता है और ये इसके साथ लिंक होता है, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ. ठीक है, तो एक वेब की तरह एक्ट आउट होता है.
ही ब्लेंड लिंग्विस्टिक्स, ठीक है, इसने ब्लेंड किया है लिंग्विस्टिक एनालिसिस एंड psychological depth. Okay, psychological depth, linguistic analysis and psychological depth. Okay, so अगर हम बात करें रिलेशनशिप टू ऑथर, ओके, अगर हम रिलेशनशिप टू ऑथर की बात करें तो इसमें है रीडर इज़ दी क्रिएटर ऑफ मीनिंग. सो इसमें जो है रीडर है वो क्रिएटर है मीनिंग का. सो रीडर इज़ स्टिल की. इसमें क्या है, बट मीनिंग ऑल्सो डिपेंड्स ऑन ह्यूज नेटवर्क ऑफ कल्चरल एंड टेक्सचुरल कनेक्शन. रीडर इज़ स्टिल की, इसमें रीडर जो है स्टिल होता है, ठीक है. अगर हम इसकी बात करें, ही टॉक्स अबाउट पॉलिटिकल डायमेंशन. ओके, पॉलिटिकल डायमेंशन की बात करें तो ये है एनालिसिस आइडियोलॉजी इन कल्चर, दैट इज़ mythology but not as a analysis ideology in culture. Okay, so he analyses ideology in culture. ओके, इसने इस चीज़ को बोला है मिथोलॉजीज. ओके, बट नॉट एज पॉलिटिकली एक्टिव इन रियल लाइफ. ओके, तो अगर हम इसकी बात करें, he talks about she talks about more openly political feminist debate, critique of nationalism. she was definitely a feminist. so कहीं ना कहीं स्टेटहुड को लेकर तो होता ही है, बिकॉज स्टेट इज़ ऑल्सो fatherly figure. Even sometimes they females also tend to um, like disagree with the hierarchy in the patriarchy. And she later talks about east-west culture politics. Okay, east-west culture politics. And other domains, if I talk about, he wrote on fashion, food, wrestling, photography and novels. If I talk about her, she talks about more practicing psychoanalysis, novelist, political commentator. If I talk about the tone of Ronald Barthes, it's gentle, ironic, something different, something, how should I say melancholic. Okay, he is really a bit sad somehow. Melancholic. Melancholic is equals to more kind of a Dostoevsky kind of guy. And if I talk about her, she is intense, काफ़ी ज़्यादा intense है, analytical है, often propagative, provocative, not provocative. Okay, then if I talk about public image, कि लोगों में उसकी इमेज कैसी है. ओके, वेरी मच नाउ डेज पीपल आर मोर वेरी क्वाइट. ओके, poetic critique of Paris. Okay, then if I talk about her, she's like charismatic, glamorous, psychoanalytic, intellectual. So I really like the people who are more talks about psychoanalysis. I don't know why. Maybe because I like Freud, the way he goes into the depth. I think if you go down and deeply understand is that why you hate somebody, I think all the problems are good. So एक और बहुत अच्छी चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी को हेट करते हो ना, इट मीन्स दैट यू आर अफ्रेड दैट ही मे डिस्ट्रॉय यू. ओके, he may destroy you. So it is like a feeling that he can destroy your image or maybe something like that. Okay, so in short, Barthes is like the poet philosopher of sign. He shows you how meaning hides in the ordinary, and how readers
give life to text. Okay, then if I talk about Kristeva, Kristeva, she is like the psychoanalytic philosopher of text. She shows you how every text is stitched together from past void and deep emotional and psychological forces shape meaning. कि कैसे आपके जो साइकोलॉजिकल मीनिंग जो हैं वो लाइक इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल फोर्सेस गिव मीनिंग. So we will also learn about this fact of hers. Kristeva bends psychoanalysis, philosophy, and linguistics to read text among like case studies. Every text is, she says, is a mosaic quotation. Mosaic of quotation. Mosaic of quotations refers to a text or work that is constructed from Mosaic. often diverse quotations, creating. She talks about the concept called as mosaic. MOSAIC. Mosaic of QUOTATIONS. Mosaic of quotations. Okay, so it stretches from the um, cultural, historic, and literary fragments. Meaning isn't fixed, it's shaped by readers' own psychology and by the semiotic. So semiotic की भाई जो आप मीनिंग कंस्ट्रक्ट करते हो वो आपकी साइकोलॉजिकल होता है. इट्स बेस्ड ऑन योर साइकोलॉजिकल. सो अगर हम बात करें सिमियोटिक के बारे में, सो इट टॉक्स अबाउट इट्स मोर इमोशनल, boldly unconscious forces and interacting with the symbolic structure and rule based language. So she's less about spotted references as Barthes often does. Like spotted references are more about how the and more about how the unconscious desire and cultural history flows through language. How Okay, so if Barthes is the cultural critique, how map out what signs mean in social network. Kristeva is the analyst who asks why those signs grip you the way you do. So that's the core of Kristeva lens. Okay, so the core work of Kristeva is KRISTE. Kristeva lens के बारे में बात करें, so she talks about the unconscious. I'm sure she's a good reader of Freud. Language carries slips, metaphors, rhythms, gaps that reveal unconscious drives. Example, even logical written has echoes of drum logic and hidden desires. Example, अगर हम example की बात करें, a novel recurring water emerges might unconsciously echo the author's early memories or anxieties even if they never intended to. For okay, दिस इज़ वन कि अनकॉन्शियस जो है वो आपका मीनिंग मेकिंग मशीन है इसके हिसाब से. सो डिज़ायर की बात करें, वी डोंट जस्ट यूज़ वर्ड, वी वांट थ्रू वर्ड्स. वी डोंट यूज़ वर्ड, वी वांट थ्रू वर्ड. फॉर एग्जांपल, द चॉइस ऑफ फ्रेज, टोन, रिदम कैन बी driven by longing, attraction, and loss or repression. Example, in love poetry
the structure itself pauses and repetition might enact yelling as much as the context does. अब इसमें यह है कि अगर हम पोइट्री की बात करें, द स्ट्रक्चर itself, for example, pauses, pause and repetition, pause and repetitions, ये भी बहुत मस्त चीज़ होती है कि might enact hearing as much as the content does, कि भाई जितना पॉज और रेपिटेशन का महत्व है उतना ही कंटेक्स्ट का भी है, ठीक है, जैसे कंटेक्स्ट उतना ही कंटेंट का भी है. ओके, देन इट कम्स टू नंबर 3, कल्चरल हिस्ट्री. अगर हम कल्चरल हिस्ट्री की बात करें, सो words are loaded with the sediment of past meaning. Every metaphor slash idiom or genre carries the memory of earlier speakers, social norms, and historical power relation. For example, the word revolution carries traces of French पॉलिटिकल हिस्ट्री. ओके, सो यार अब बात ये है कि जो रेवोल्यूशन है ना वर्ड, हमारा तो सिर्फ ये है कि 1857 का रेवोल्यूशन या कुछ भी, ठीक है. सो रेवोल्यूशन का जो है ना, ये सिंगल वर्ड ही काफ़ी ज़्यादा हिस्ट्री पीछे से कैरी करता हुआ आ रहा है. फॉर एग्जांपल, अगर हम रेवोल्यूशन की बात करें, तो अगर हम बात करें फ्रेंच की, फ्रेंच पॉलिटिकल हिस्ट्री, ओके, इट टॉक्स अबाउट मार्क्सिस्ट थ्योरी के बारे में बात करें, ओके, पॉप कल्चर स्लोगन्स ऑल शेपिंग हाउ वी रीड इट टुडे, ठीक है, पॉप कल्चर. ओके, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो. थैंक्स.